Hello everyone. Today we have Shashwat with us. He has been working in Amazon from last 7 years, and currently he is working in US and as a software engineer. And his hometown is Gonda. Let us start with interview. Like we will be adding interesting things about him, and also we covering his journey from India to US and from a developer to senior developer. So hi Shashwat. Hey, Akan, I'm glad to be part of this interview. So yeah, thanks for inviting me in. But yeah, I can start with my small introduction actually. Yeah. So yeah, like my name is Shashwat, as you already mentioned. I have been with Amazon from last 7 years, working for Amazon from last 7 years. Currently working as a senior software engineer in United States. Uh, so yeah, that's a small background. I can go with the educational background. Like, let's start with that as well. So I think that will help others to know more about me, right? Yeah. So actually, I belong from a district Gonda. I don't know, like if people know about Gonda because it's a district. It's in, I will say it's in middle of like Gonda, sorry, middle of Gorakhpur and Lucknow. So, but that is a town. So I completed my high school and intermediate from there, from my town, and I belong from one of the small town. That name is like Colonelganj. We call it a Colonelganj in Hindi. So I completed my high school and intermediate there. Then I moved actually. So that was the first time when actually I saw the outer world. Like I was just like I was. You can say it like I was not. I had not exposure to the outer world at that time. So that was the first time when I actually went outside of my zone. So I went to Lucknow. I basically did my graduation from Lucknow University, but not exactly from Lucknow University, from one of the colleges of the Lucknow University, and it was CRPG College. It is in Daliganj. The main reason for me to pick the CRPG college was I was very interested in computer science. So I was getting computer science as one of the subjects. So like I did my BSc from there. So and there like I got the subject like computer science, mathematics, and physics. Again, like it's not necessary anyone like if you are pursuing MCA or anything, you must have like computer background. It's completely optional, but it was just like a add-on for me. Like, and since I was interested, I didn't even know that I'm going to pursue MCA in future. So what I did, I simply got that college, and I also did not had good percentage in, just to let you know, like I did not had good percentage in high school and intermediate, so that I will get computer science in Lucknow University, because even at that time, if you want to get computer science in Lucknow University, you will have you must have at least, I guess, 80% or above, right? And I was like I was happy in my zone, like in a high school intermediate. Like I will talk about that more, what was my percentage and all. But yeah, like I did my overall graduation from CRPG college, and after that I joined INPS. Uh, and Nitin sir like guided me a lot. Like I got lots of motivation there, like how to prepare and all those things. Um, and then finally got selected. I got like single digit rank in like top universities like IIT Roorkee, UPTU, and all those things, Pune University. So, and just to let you know, again, like this thing we will cover again in some time. At that time, I was not even eligible for uh, NIMSET. I think I don't know like what it is called, but at that time it was NIMSET. So I was not eligible for NIMSET because I had not 60% in high school. So but now the story is completely different. People have lots of opportunities. But yeah, like I got, but luckily like I was selected. I had an option of IIT Roorkee and all those things. So I went there, completed my masters from IIT Roorkee, then join. Then I also got placed from campus even in Amazon. So I joined Amazon in back like over there like in Bangalore. Then I moved to US. So this was my overall journey up to this point.
And even in like as I mentioned, like I am working with Amazon from last 7 years. I have basically seen so many phases, so many things now in my professional career, and now I am actually um, basically working as a senior software engineer. So yeah, this is overall journey. So yeah, we can now continue with the rest of your questions. Yeah. Actually, I want to tell you that I am from Lucknow, so from Indian That's University, great. and I've done my graduation from National PG College. Oh wow, wow, National PG College. Nice, nice, Yeah. nice, nice. Yeah, yeah. That's good. That's good. So, like Shashwat told कि उनके 10th and 11th 10th and 12th में इतने अच्छे परसेंटेज नहीं थे. Still he is working in Amazon in US. So like बहुत से स्टूडेंट्स का ये परसेप्शन होता है कि यार मैं 10th और 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं सकता. So we have examples in front of us. Like Shashwat is with us, and let's know like how do you get to know about INPS? Okay, okay. Before INPS, I will tell you like okay, just guess like what was my percentage in high school in mathematics. Just guess because mathematics is the key. I will say like, math is the key part to be basically to get selected for any top Yeah. universities, right, Yes. or any top college. So guess karo like kitna. Could you just imagine? I can definitely tell you, but I just want you to like just guess. What do you think? Unless you have told that you have got less marks, I would be like guessing around 95% to 96%. But now I know that you have got less marks, so maybe 70 to 80 percentage. No, I got 49% in mathematics. So you Oh, can say like I got like only 49% in mathematics in high school. तो अगर मैं 49% नंबर पाके और उस टाइम लोगों ने ऐसा भी कहा कि देखो इसके 49% है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, जिसको बायो दिला दो. So that kind of discussion happened between my father and one of his closest friend. तो ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ. बट हाँ, वो डिफरेंट स्टोरी है कि क्या हुआ उसके बाद में. But I think like it should definitely motivate others. Like I had 49%, and after that, like I cracked lots of colleges, and as I mentioned, like कि single digit rank मिली मुझे, top universities में मिली, और with the guidance and all. तो मुझे लगता है कोई भी ये चीज अचीव कर सकता है. I was not a very top student of my class, but still I will say like I was a survivor. Okay, so yeah, now we can come to the point like how I got to know about INPS. Okay, so actually graduation second year की बात है कि it was ऐसे लाइक मेरे एक सीनियर थे, सीनियर क्या मेरा क्लासमेट था, तो उसके बड़े भैया प्रिपेयर कर रहे थे एमसीए के लिए. आई डिडंट नो मच अबाउट एमसीए एट दैट टाइम कि क्या होता है एमसीए, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या है. But one thing was there, like when I got to know he got some rank in UPTU, and I heard that rank, and I asked him like, okay, what kind of syllabus it has. I also googled at the time. उस टाइम इंटरनेट के लिए हमें साइबर कैफे जाना होता था. तो डार्लिंग क्रॉसिंग पे एक ऐसे साइबर कैफे हुआ करता था उस टाइम पे. तो गए, 10 रुपए दिए हमने, देखा सिलेबस की प्रिंट आउट लेके आए, मोटिवेट कि आज तो फाड़ के देंगे. आई एम जस्ट टेलिंग कि फिर क्या हुआ कि उनसे पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैथमेटिक्स एंड लाइक कंप्यूटर साइंस के बेसिक क्वेश्चंस, लाइक सी प्लस प्लस के बेसिक क्वेश्चन, ये सब सारी चीजें आती है. अच्छा, उस टाइम आई गॉट लाइक मोर कॉन्फिडेंस कि हाँ, दिस इज द थिंग आई वांट टू डू, बिकॉज मैथमेटिक्स वाज द वन लाइक जहां पे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि वो लॉजिकल है. मतलब ऐसी चीज है जो कि आप समझोगे तो समझ में आ जाएगी. yeah. अगर आपको सही से गाइडेंस मिल जाती है तो हो सकता है. देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. तो मुझे लगा कि ये मेरी मेरी वाली फील्ड है, तो लेट्स ट्राई दिस आउट. फिर मैं अच्छा, वो आईएनपीएस से ही थे लकली. तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है. फिर मैं गया आईएनपीएस, आई ज्वाइंड आईएनपीएस. देन व्हेन आई ज्वाइंड फर्स्ट क्लास एक्चुअली नितिन सर का, तो
तो वहां पे मुझे काफी मोटिवेशन मिला, मोटिवेशन इन द टर्म्स लाइक कि जब सर बताते हैं चीजें, राइट, तो मैंने बहुत सारे टॉपिक पहले भी पढ़ रखे थे, डजेंट मैटर, लेकिन जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा मैं तो कुछ नहीं पढ़ के रखा हूँ। बिकॉज लाइक जब आप सिलेबस पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो कि जैसे मुझे एग्जाम में मार्क्स लाने हैं समथिंग, आप बस उसको पढ़ते हो, राइट, यू डोंट इवन लुक एट द एग्जाम्पल्स, यू डोंट इवन सी की ट्रिक क्या है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। यही यही डिफरेंस होता है कि जब कोई नॉर्मल बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करता है और जब कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, राइट। तो आपको सही स्ट्रेटेजी नहीं पता होती, आपको ये नहीं पता होते कि बाहर कितने सारे लोग हैं जो कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं, राइट, और किस गाइडेंस में है। क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में था, मेरे हाई स्कूल परसेंटेज मेरे नहीं अच्छे थे, इंटरमीडिएट में somehow I was able to manage 76% mathematics, but the thing is like फिर भी एक फ्रेज है वहां पे, अंधों में काने राजा, राइट। तो मैं वहां पे अंधों में काने राजा था, क्योंकि आई वॉज गुड इन मैथमेटिक्स एट दैट टाइम, लाइक इन इंटरमीडिएट। तो लोगों बस यही लगता था कि हाँ मैं सही हूँ, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ। इवन मेरे कलीग्स जो है 99 मार्क्स लेके मतलब बैठते हैं, बट इट डजंट मैटर, नाउ इट डजंट मैटर, बिकॉज आई नो कि इट डजंट, परसेंटेज कभी मैटर नहीं करता, दैट आई नो। इवन अभी जब आप रिज्यूम बनाते हो तो रिज्यूम में अपना परसेंटेज नहीं मेंशन करते, इट ऑल डिपेंड्स कि आप, इट्स ऑप्शनल, लाइक इफ यू वांट टू मेंशन यू कैन मेंशन, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली योर अचीवमेंट। इफ यू गॉट गुड मार्क्स जस्ट प्लीज मेंशन इट, लेकिन कोई नहीं पूछने जाता आपके परसेंटेज कितने थे, क्योंकि अगेन लाइक वी विल कम ऑन टू दैट पॉइंट कि क्या होता है उस टाइम पे। लेकिन ओवरऑल मेरे यही हुआ कि परसेंटेज बहुत अच्छे थे नहीं, हम बाहर गए, वहां पे एडमिशन लिया सीआरपीजी कॉलेज में, सेकेंड ईयर में हमने देखा कि आई गॉट टू नो अबाउट कि एमसीए क्या है। फिर आई गॉट द गाइडेंस ऑफ लाइक नितिन सर कि, और उनकी कुछ लाइनें बहुत ही मोटिवेटेड थी। जैसे शुरू में उन्होंने बोला कि एक, मुझे अभी भी दो चार लाइनें याद है, मतलब इट हैज बीन अराउंड 10 years एक्चुअली आई एम टॉकिंग, बट स्टिल सम ऑफ हिज लाइन्स, जैसे कि एक था कि like at the time IIT Roorkee had like 24 seats, right, and I did not had enough option क्योंकि मेरे परसेंटेज ही नहीं थे। और इवन आफ्टर दैट आई वांटेड टू गिव निमसेट बिकॉज आई वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड आई वाज लाइक कि मैं तो कोई भी एग्जाम निकालूंगा, मतलब आई वाज दैट काइंड ऑफ, मेरे साथ था कि भाई मैं दूंगा भले मेरा एडमिशन ना हो, एटलीस्ट आई कैन से कि देखो आई गॉट सम रैंक ओवर देयर। लेकिन समहाउ आई डिडंट गिव दिस निमसेट पेपर। लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी निमसेट के बहुत सारे सीट्स हैं, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं, मुझे तो लगता है ये बैकडोर है, मतलब बैकडोर मतलब किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाने का बहुत ही आसान तरीका है, और लोग प्रिपेयर करते हैं पूरा एकदम लग के, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। मैंने देखा है 5-5 साल 6-6 साल लगे रहते हैं, उसके बाद में उनको निराशा लगती। ये ऐसी फील्ड है जिसमें कंपटीशन कम है, आप अच्छे कॉलेजेस पा सकते हो, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको आगे बढ़ाते हो, राइट, हाउ डू यू कंटिन्यू विद दैट अपॉर्चुनिटी विच यू गॉट इट लाइक इजली, मतलब इजी मतलब वाया बैक डोर। तो वो सब चीजें बहुत ही की मैटर थी, तो इसलिए मैंने फिर गाइडेंस में, अच्छा जो मैं बता रहा था कि लाइन उनकी क्या थी, तो एक ये थी कि उस टाइम देयर वाज लाइक ओनली 24 सीट्स, तो वो ये कहते थे कि you don't need all 24, और that's very basically बहुत ट्रू वर्ड है ये एक्चुअली। अगर आपको 24 पे 24 चाहिए तो ठीक है भैया, नहीं हो पाएगा, दैट आई एम प्रीटी श्योर, मेरा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 24 में एक चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, राइट, क्योंकि 24 में एक तो आसानी से मिल सकता है। अच्छा वही चीज हमारे साथ था कि लाइक एक तो वो लाइन थी कि 24 में हमें एक लेना, दिमाग में बैठ गया भाई 24 नहीं चाहिए, एक भी कोई आ जाए। दूसरी ये थी कि लाइक either you are coming first or last, it doesn't matter, right? If you get good or top college, that only matters, और अंदर जाके सब बराबर होते हैं। even if you compare it with the BTech student, कोई out of the box नहीं होता है, सब के सब वैसे होते हैं। मैं I was in that college, so I know each and every point कि कितने में क्या है, कौन है। अब बस वो लोग, इतना होता है कि आप 2 साल एक लग के डेडिकेशन के साथ में किसी चीज की आप तैयारी की हो 2-3 साल, तो यू गॉट द रिजल्ट एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर टुडे, राइट। लेकिन अंदर तो करिकुलम फिर से सबको सेम ही पढ़ना है, दिमाग सबके पास सेम ही है, ऐसा तो है नहीं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपने किया या बचपन से आपको फीड करके बताया गया, एकदम सबके लिए सब कुछ नया है। तो अंदर सब बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। इवन कोई भी कॉलेज, अच्छे कॉलेज मिल जाए, मैं तो कहूंगा हमेशा ट्राई करो अच्छे कॉलेजेस के लिए,
और कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, अंदर कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं होता है। यू शुड नो कि व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू डू। और ये अगर कोई डायरेक्शन में देने वाला हो जाए तो आराम से हो जाता है। तो वही सारी चीजें, वो जो लाइंस थी, और वो सब मोटिवेशन अभी भी मेरे अंदर है कि लाइक वेन एवर आई टेल समवन कि देखो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर, दीज आर द लाइन आई ऑलवेज यूज, जो कि मैंने सर से ही कॉपी किया है। अच्छा, तो एक और दूसरी चीज आई विल से कि डेडिकेशन पार्ट, लाइक मैंने, डेडिकेशन और रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मैंने कोई टेस्ट नहीं मिस किया, पहली चीज तो ये। इवन व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड, तो उस टाइम पे क्या था कि हमारा पेपर पहले हो गया था, मतलब आई गॉट टू नो अबाउट माय रिजल्ट इन फेब, in April, I guess, like in on April 10th or something, I got to know that I got selected. तो उसके बाद में यूपीटीयू का एग्जाम लगा हुआ था, फिर भी मैं मॉक टेस्ट देने जाता था। आई यूज टू गिव मॉक टेस्ट एंड ऑल, कि भले ही, क्योंकि आई वाज प्रिपेयर्ड, आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि ये भी निकालेंगे। अच्छा, आई वाज ट्राइंग कि मेरी कहीं गलती से फर्स्ट रैंक आ जाए तो अच्छी बात है। Yeah. I got 10th rank, and the only reason I got 10th rank, now after that, like I felt कि शायद वो 10 से एक हो सकता था क्योंकि उसमें बस प्रोबेबिलिटी के मैंने बाद में गड़बड़ किए थे कुछ क्वेश्चंस। अभी याद है, शायद 2 या 3 क्वेश्चंस मेरे और पहले और 10वें रैंक में डिफरेंस था। आई फेल्ट लाइक कि काश ये हो जाता है, because the kind of recognition you get, right, if you get a first rank. I'm not asking everyone to get first rank, I'm trying to tell ki, even like when I got like 10th rank and I got like a good rank in like single digit rank or 9th rank, like in good colleges, everybody basically, I was recognized at all the forums, right, everybody started knowing my name। तो वो जो फील होता है, और इवन जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो एक लिस्ट आती है, लिस्ट में देखते हैं टॉप 5 कौन है, टॉप 3 कौन है। तो वहां पे भी अगर आप आते हो, कंटिन्यूटी आप रखते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ फेम के लिए करते हो, ये आपकी डेडिकेशन है कि आप करते हो, लेकिन अगर वो कंटिन्यूटी रखते हो, अगर आपको कहीं बाहर होते हो उस रेंज से, अगेन सबकी 5 तो आ नहीं जाएगी विद इन 5, आएगी किसी किसी की 5, लेकिन यू कैन ट्राई हार्ड, राइट। और उसके बाहर के भी हो तो भी, लाइक एटलीस्ट एग्जाम में तो सबको भाई बैठेंगे, उस दिन कैसा आपका है, आप वेल प्रिपेयर्ड हो, जस्ट आप हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जब 5 रैंक निकलती है, 3 रैंक निकलती है, और उसमें जब देखो कि मेरा नाम है, एंड लाइक एंड देन यू फील सेटिस्फैक्शन कि जो मैंने मेहनत किया, दैट गॉट पेड ऑफ, राइट। कि देखो मेरा नाम, और ये कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर नहीं हो, आपने एक में ले आए, अगले में नहीं लाए, तो कोई मैटर नहीं करता कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है। आई कैन गिव माई पर्सपेक्टिव अगेन, लाइक whenever the time, like whenever we discuss more in this, but yeah, this was the overall summary, like how I got to know about INPS, what was the lines which actually motivated me, and not those time, like these are the lines which are actually motivating me today even। कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से है, कोई भी कैसा भी है, doesn't matter, now they are working like दे आर माई कलीग्स, राइट। कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने क्या थे पास में, डजेंट मैटर। द मैटर जो करता है वो ये करता है, आप अभी कितना परफॉर्मेंस, आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आप कैसे चीजों को कैच करते हो, आप कितना इनपुट, आप कितनी तरह, आप कैसे बेसिकली कंपनी को, जो कंपनी चाहती है उसके हिसाब से आप किस हिसाब से आप काम कर सकते हो। सो दैट्स ओनली मैटर। So yeah, so that's my answer actually for that question। Okay, awesome. आपको एक सर्किल लाइन याद है कि पढ़ने वाला पढ़ने के बहाने ढूंढता है, ना पढ़ने वाला ना पढ़ने के। Like that line motivated me a lot. Actually, ये जो लाइन है बिल्कुल सही है। मतलब जब आप, अगर आपको पढ़ना है तो आप कहीं ना कहीं से बहाना ढूंढ लोगे कि हाँ मेरे को पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ना है तो आप उसके लिए भी बहाने ढूंढ लोगे कि मेरे को नहीं पढ़ना है। रीजंस डिफरेंट रहते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि सर ने बोला था कि एक सीट चाहिए, तो ये किसी भी चीज को देखने के 2 व्यू हो सकते हैं। लाइक इतने सारे बच्चे, इतने सारे कंपटीशन है, और फिर जब सर ये बोलते हैं कि तुमको एक ही सीट चाहिए, तो वो कितना ज्यादा इजी लगने लगता है कि हाँ यार अपने को तो एक ही सीट चाहिए, इतनी सारी सीट है, अपने को तो एक ही सीट चाहिए। हाँ बिल्कुल। और ये भी होता है कि जितने लोग फॉर्म भरते हैं, राइट, मैं तो 90% लोग तो बस ठीक है भर दिया फॉर्म, जाके एग्जाम दे के आ गए। देयर ओनली 10% लाइक हु आर एक्चुअली सीरियस। उसमें भी 5% ऐसे होते हैं जो कि डेडिकेटेड करते हैं। तो 5% के तो साथ कंपटीशन है। अगर 20,000 लोगों ने फॉर्म भरा है
तो आपको कंपटीशन 1000 लोगों के साथ में, इज इट लाइक दैट गुड कि आपका 1000 लोगों के साथ कंपटीशन है, उसमें भी आपके पास, अरे मैं तो कह रहा हूँ निमसेट में लाइक 1000 सीटें कोई भी कॉलेज मिल जाए, मतलब ट्राई करो कि लाइक जस्ट गेट, ट्राई टू गेट टॉप कॉलेजेस, लाइक टॉप 50 टॉप 10 में लाने की कोशिश करो। आई थिंक एनआईटी ट्रिची एंड ऑल इज बेस्ट, आई डोंट नो लाइक इट वाज बेस्ट एट दैट टाइम एनआईटी में, उस पर ट्राई करो, एनआईटी सूरत का, ट्रिची, एमएनआईटी, लाइक आई थिंक दैट वाज आल्सो गुड। सो जितने भी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, आप ट्राई करो, कोशिश करो कि आप रैंक लाने की। नहीं आता, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो भी चलता है, ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको एनआईटी का कॉलेज मिलेगा, आप टैग लगा के घूमोगे, देखो मैंने एनआईटी इस एनआईटी से किया। हाँ, और टैग बहुत इंपॉर्टेंट करता है इंडिया में, टू गेट एन बेसिकली कॉल फॉर द इंटरव्यू, टैग बेसिकली मैटर्स अ लॉट। अगर आपके पास वो टैग नहीं है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएंगे अच्छी कंपनी से। तो ये चीज दिक्कत होती है, ये फॉरेन में नहीं है, ये बाहर नहीं है, बाहर के कॉलेजेस में मैटर नहीं करता, लेकिन इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत मैटर करता है। तो टैग कॉलेज अच्छा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, so Shashwat, let's come to your career. Like अभी तो आप Amazon में हैं, बट आपने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया था? लाइक किस कंपनी को ज्वाइन किया था, देन आपने कैसे मूव ऑन किया एंड यू स्विच टू यूएस, एंड हाउ डिड यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू लाइक वर्क इन यूएस, और शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज। ओके, या श्योर। आई थिंक मैं उससे पहले बात करूंगा कि अमेजोन में सिलेक्शन कैसे हुआ और इवन हमने प्रिपेयर कैसे किया। तो हो सकता है कि अभी जो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो उस टाइम की बात हो रही है कि जब आपको कॉलेज मिल गया, अब आपने पूरा कर लिया, प्लेसमेंट का टाइम चल रहा है। तो हमने क्या किया था, लाइक मी एंड माई couple of my friends, what they did, we were like very focused on competitive programming। तो हमने क्या किया, जितने भी तरह के कंपटीशन हो सकते थे, अब चाहे वेबसाइट, उस टाइम पे कोडचेफ ज्यादा फेमस हुआ करती थी, कोडचेफ था, टॉप कोडर था, लीड कोड वाज देयर, गीक्स फॉर गीक्स वाज देयर, बट गीक्स फॉर गीक्स टाइम इनिशियल स्टेज में था। तो हमने क्या किया कि हमने एक और कुछ लाइट ओजे करके था, तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स थी, तो हम जो फोकस करते थे, और कोडशेफ में टॉप प्रोग्रामिंग, मतलब टॉप 10 प्रॉब्लम्स आती, 10 प्रॉब्लम्स एवरी मंथ आती थी जिसको आपको सॉल्व करना होता था। तो हम ट्राई करते थे एट मैक्स कितने सॉल्व कर सकते हैं, एंड लाइक I was at a point like I was able to solve like 7 question out of 10, then that was like I felt very confident at that time कि हाँ। और लेकिन अगर आप वो कंटिन्यूटी रखते हो तो क्या होता है कि जब इट्स नॉट लाइक आप सिर्फ 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इट ऑल्सो मैटर्स कि आपने उतने कितना दिमाग लगाया उसके पीछे। और उसमें हमारी जो 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 प्रिपरेशन थी, बिलीव मी, लाइक मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं किया था किसी भी इंटरव्यू के लिए कि चलो ये कंपनी आ रही है, मैं स्पेसिफिकली इसके लिए इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करूं। बस हमने जो फोकस किया था वो ये था कि हम 7 क्वेश्चन ये सॉल्व कर पा रहे हैं, और भी कोई कंपटीशन हो रहा है या कुछ भी, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है। कई वेबसाइट्स जहाँ पे कैटेगरी वाइज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका ट्रीज रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस तरह से ऐसे कैटेगरी हुआ करती थी। तो हम उससे एक कैटेगरी से सॉल्व करते थे। तो लाइट ओजे उस टाइम पे था एक, अब पता नहीं है या वो वेबसाइट नहीं है, उसमें भी कैटेगरी हुआ करती थी। तो हम उसके अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया करते थे, और डिस्कशन करते थे आपस में कि कैसे, क्या स्ट्रेटेजी है एंड ऑल। फिर क्या हुआ कि जब ऐसा होता है हमारे यहाँ पे, ऐसा हुआ करता था कि दिसंबर में कंपनीज आती थी फॉर द प्लेसमेंट। उससे पहले हमारा मई जून में ऐसे जब सेमेस्टर खत्म होते हैं तो वी स्टेड इन द कॉलेज। तो वहां पे हमने क्या किया कि वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। और इंटरव्यू प्रिपेयर मतलब वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर द क्वेश्चन कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं एल्गोरिथम से रिलेटेड। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट्स नॉट लाइक वी स्टार्टेड राइटिंग द कोड फॉर इट, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमने वो क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था उसको। तो हमने क्या किया, गीक्स फॉर गीक्स उठाया। वो तो गीक्स फॉर गीक्स में उस टाइम पे, अब तो बहुत ही इनहांस कर गया गीक्स फॉर गीक्स। पहले ऐसा था कि ऐसे थे कि 100 सेट ऑफ आपके क्वेश्चंस होते थे, जिसमें लाइक जिसमें जैसे किसी का इंटरव्यू हुआ, उसने अपने 5 क्वेश्चन डाल दिए, उसने 10 क्वेश्चन डाल दिए, ऐसे होते थे। तो एक्सक्यूज मी, तो उसमें क्या हुआ कि हमने उठाना स्टार्ट किया, और विद इन लाइक 3 days एक्चुअली वी वेंट लाइक विद ऑल द क्वेश्चन। और हम सोल्यूशन भी नहीं देखते थे उसका, और हम बस ये उसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते थे, एंड वी वर एबल टू सॉल्व लाइक ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो हमने 3 दिन में खत्म किया।
अब लोग उसके बाद पूछते थे भाई गीक्स फॉर गीक्स तुम कितने दिन टाइम लगेगा तुम्हें सॉल्व कर, मतलब लाइक हाउ मच टाइम यू एक्चुअली स्पेंड इन ऑर्डर टू सॉल्व द गीक्स फॉर गीक्स। तो जब मेरे से कोई पूछता था मैं तो बोलता था 2 से 3 दिन। इट्स नॉट लाइक इट टुक ओनली 2 to 3 days। द मेन टाइम विच आई स्पेंट वाज वे बिफोर दैट, राइट। हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब से गए तब से हमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को एकदम बना लिया कि ठीक है सिलेबस इज वन थिंग, वी शुड हैव अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ बेसिकली दिस थिंग एंड दैट थिंग बोथ। लेकिन हमने कंपटीशन वो नहीं छोड़ा, हमने कंटिन्यूअसली उसके लिए प्रिपेयर किया। उसका फायदा हमें हर कंपनी में मिला, लाइक आइदर इट वाज गूगल। बेसिकली फर्स्ट डे तो ऐसा होता है वहां पर, डे 0 डे 1 ऐसा होता है। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो लाइक 4 डिफरेंट कंपनीज में मेरा पहले दिन था, और उसमें ये होता है पहले आपका रिटर्न होता है, और रिटर्न में ऐसा होता है वो सीधा आपसे कंपटीशन 2 प्रॉब्लम देते हैं आई गेस, उस टाइम तो ये देते थे 2 प्रॉब्लम कोडिंग देते थे और थोड़ा बहुत आपके आई गेस एमसीक्यू टाइप में देते थे। तो अगर आप बहुत स्ट्रांग हो कोडिंग में तो आपको एमसीक्यू इतना भी खराब होता नहीं किसी का। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होते हो आप, सब चीज पढ़े होते हो, उसके लिए भी आप प्रिपेयर करते हो कुछ ना कुछ। तो अगर लाइक आउट ऑफ 20 क्वेश्चन अगर आप 10 भी अगर उसको सॉल्व करते हो, 12 सॉल्व करते हो और 2 कंपटीशन 2 वो कोडिंग कर देते हो, आराम से आपका इंटरव्यू के लिए वो कॉल कर लेंगे आपको। और उसके बाद में इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा अमेजोन के इंटरव्यू का। मेरा उस टाइम पे सिस्को का भी इंटरव्यू था, गूगल का भी इंटरव्यू था, ऐसे करके कई सारे इंटरव्यूज थे। तो इसमें अमेजोन के इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि उस दिन मेरे ओवरऑल 10 इंटरव्यूज या 10 या 12 इंटरव्यूज पूरा हुआ था पूरे दिन में, 10 और 12 लगभग ऐसा कुछ था। मॉर्निंग 8 से लेकर के रात के 12-1 बजे तक कुछ ऐसा हमारा था ओवरऑल। तो अमेजोन का हमारा 4 या 5 राउंड थे ऐसे कुछ था। तो उसमें हमारा पहले राउंड में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही फैमिलियर क्वेश्चन उन्होंने पूछा। सेकेंड राउंड वाज वेरी गुड। तो उसमें मेरे से उन्होंने क्या पूछा, द इंटरव्यूअर हु वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस, उन्होंने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे जो कि मुझे कोडिंग करवाई। तो मुझे उस टाइम लगा कि कॉलेज का हाई जो कोडिंग का बार होता है वो काफी हाई बार होता है, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन वो करवा रहे हैं विद इन 1 आवर एंड आई वाज एबल टू सॉल्व एट दैट टाइम। तो मैंने 2 वो कोडिंग कर दिया, बट like he didn't stop at that time and he continuously asked me like 3 more questions, but he did not ask me to write the code, he just asked me the strategy and I was very well prepared at that time. तो मुझे बस मतलब even if the question was new but I knew how to basically solve the problem because DP आती थी। I was not that great in DP but DP greedy problem I was somehow able to solve it. I was good in recursion, तो कोई भी प्रॉब्लम हो कैसी भी प्रॉब्लम हो I was able to solve with the recursion। ट्रीज एंड ऑल पे भी कमांड था ही, डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड था ही। तो somehow like whatever option question he was asking I was able to give 2 or 3 solution to that particular person and he was very impressed with that. The second round interview, third was again like they started asking me about the my projects and then they started asking me the standard question. I think you will find all kind of question in Geeks for Geeks, Lead Code and all. So that's the same, it was nothing new. Fourth round में that was with hiring manager actually at the time. तो उसमें मेरे से 2 behavioral question भी पूछते हैं क्योंकि Amazon में आपके behavioral को बहुत important करता है। like आप competition, आप academic बहुत strong हो लेकिन क्या आप survive कर पाओगे यहाँ के culture में, आप are you a good fit for the team or not, it matters a lot. It matters a lot to Amazonians, like it basically वो आपको होना ही पड़ेगा 50-50 you can say। तो उन्होंने वो भी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे। लेकिन उस टाइम पे कॉलेज हायर होते हो तो बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं होते हैं आपके पास में, बट इफ यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड यू कैन एक्चुअली रिलेट विद समथिंग एंड इन सम वे यू कैन जस्ट एक्सप्लेन कि दिस इज हाउ यू विल हैंडल और यू हैंडल्ड दिस सिचुएशन बिफोर। और उसमें उन्होंने एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा। तो ऑल द राउंड्स वेंट वेरी स्मूथ, वेरी गुड फॉर मी एंड they were like they only basically took 2 people at the time us basically us time pe, or I was one of them, or I was very happy at that time because that was the first job you are getting offered, right? तो आपको लगता है कि भाई ओके वन थिंग मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैं हाई स्कूल में था या इंटर में था या इवन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तो मुझे लगता था कि जब लोग पूछते थे व्हाट इज द गुड सैलरी, राइट, तो मैं कहता था कि ठीक है यार 50,000 40-50,000 रुपए या ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाए 30-40,000 रुपए मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगी, उसी में कर लिया जाएगा। क्योंकि बिकॉज लाइक आई हैड नॉट सीन बियॉन्ड दैट, राइट। तो
तो मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, कि क्या क्या अच्छे पैसे किसको अच्छे पैसे कहते हैं, राइट? तो और ये भी एक चीज और है कि आप 5 कमाते हो तो भी आप जी रहे हो, आप 5 लाख कमाते हो तो भी आप मतलब आप जी रहे हो। सो इट्स इट डिपेंड्स कि आप स्टैंडर्ड कैसा है, आप जो सकते हो नहीं कर सकते हो, आप पैसे के बारे में सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो, इतना फर्क आता है। तो उस टाइम पे मेरी ये मेंटेलिटी थी कि 30,000 40,000। व्हेन आई गॉट प्लेस्ड इनटू Amazon एंड ऑल, उस टाइम पे उनका पैकेज कुछ था 24 लाख और समथिंग, ऐसे कुछ कुछ था। उनका बेसिकली उनके कुछ स्टॉक से थोड़ा सा वो ट्रिकी पार्ट है। तो मतलब आई थिंक यू माइट ऑलरेडी अवेयर कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Yeah. लेकिन एक चीज आईटी में बहुत अच्छी बात है, इवन ठीक है आई गॉट गुड बेसिकली कंपनी, बट इवन इफ यू somehow get to manage like कोई भी कंपनी, राइट? बट देर इज ऑलवेज a चांस टू जंप, राइट? तो अगर कोई भी कंपनी में इंटरव्यू कर जाओ और आप उसके बाद में क्या करोगे कि लाइक यू कैन सिंपली मूव राइट टू द न्यू कंपनी, एंड योर बेस पे लाइक जो भी पे चेक है वो डबल ट्रिपल कैसे होगा, यू विल नॉट इवन फील कि ये कैसे हो गया, कब हो गया। विद इन लाइक 2 years 3 years आपका कितना स्किल बढ़ेगा, यू कांट इवन इमेजिन। और आजकल तो इवन स्टार्टअप भी बहुत पैसे दे रही है, लाइक अभी भी कोई भी स्टार्टअप आ जाती है, लाइक उनका भी स्टार्टिंग सैलरी ठीक है 1 लाख से दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, मतलब कहने कुछ भी देते हैं, ऐसा है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं हर चीज में। तो when I got to an Amazon, I so there is a process like in here in Amazon. I will say if you want to move to US or some place, I'm first of all I'm not advocating people कि तुम्हें move करना ही चाहिए या ऐसा कुछ है। I'm just saying this is as a choice कि if you want to move to US or some place, uh, uh, companies like big companies like Amazon, Google, Facebook, Microsoft, these are the best company to basically get selected. तो जैसे Amazon में ऐसा होता है कि जब आप जाते हो तो वहां पे आपको आफ्टर लेवल वहां पे क्या होता है, यू कैन चूज दैट यू डू यू वांट टू गो टू यूएस और नॉट इवन यूएस, यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर द your team is not your team, like any team you can apply for any team, just give an interview and you can just move in that country. And again like it's not only for US, you can, so basically वो बहुत ही easy है क्योंकि आपको ऑलरेडी काफी कुछ डोमेन के बारे में नॉलेज हो जाती है, और जब किसी को हायर करके उतना ट्रेन करके उनको करना होता है तो वो ज्यादा डिफिकल्ट पड़ता है उनके लिए। तो इट्स समटाइम इट्स इजी टू गेट बेसिकली ऑफर, basically even for them like it's easy to basically offer someone who is already highly trained on that thing, right? तो और आपके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कहीं भी जा सकते हो। तो ये बहुत ही इजी है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट का भी कॉन्सेप्ट, तो वहां भी आफ्टर अ लेवल यू कैन ऑल्सो स्विच, you can also apply for a team, you can just give the internal interview and you can just move in, right? तो ऐसे लगता है मुझे कि ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही आसान है, लाइक इफ यू वांट टू मूव टू सम कंट्री, दिस इज अ वेरी इजी वे टू बेसिकली मूव इन, because you have knowledge, you have things which nobody has, and this is the like you are basically in demand, that's the thing, right? अगर आप डिमांड में होगे तो सब आपको पूछेंगे, और अच्छी कंपनीज में जाने का सबसे बड़ा फायदा यही है, आप डिमांड में होते हो। अगर आप, और एक चीज और है कि अगर आपको अच्छी कंपनी नहीं भी मिलती है, आप किसी भी कंपनी में जाते हो, एज आई मेंशन आप स्विच कर लो, इवन उसमें भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तरीके से, लेकिन आप स्विच कर लो, आप बस आप डोंट बेसिकली सेटिस्फाई विद लाइक व्हाट यू गॉट, राइट? आई एम सेइंग लाइक यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट, यू शुड बी प्राउड अबाउट इट कि हाँ आई गॉट इट, राइट? आई, इट्स नॉट अ इजी टास्क टू गेट दिस थिंग, लेकिन आई विल सेटिस्फाई से नहीं होना जस्ट है। सेटिस्फाई नहीं होना है, लाइक ठीक है मैं और अच्छा कर सकता हूँ, ये नहीं कि बैठ गए ठीक है अब 10 साल हम्म। इसी में निपटाएंगे, अब ठीक है लाइफ बैलेंस चल रहा है सही चल रहा है, इट्स ओके, राइट? तो ये सब नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने आप को चैलेंज नहीं कर रहे हो, यू विल, जैसे आपकी लर्निंग स्टॉप होती है, मतलब यू विल स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड एंड ऑल दोस थिंग, आपको लगेगा एक टाइम के बाद, जैसे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन सम टाइम आई फील कि जो गवर्नमेंट जॉब में लोग बैठते हैं और उसके बाद में लाइक बाबू होते हैं, उनको उनकी भी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपसे जब वो रूड बात करते हैं आपसे, तो ये नहीं है कि वो चाहते हैं आपसे रूड बात करना, लेकिन वो ऐसा माहौल मिल जाता है, वो क्या करे बेचारे दिन भर, उनको भी पता है कि सुबह से 9 से 5 बैठना है, या 9 से जो भी है टाइम बैठना है, 10 से 5 बैठना है, एक ही काम है। आप यहाँ पे एक खाना तो खा नहीं जाता एक हफ्ते में,
वहां तो आप बात करो पूरी जिंदगी बैठ के एक ही काम करना, राइट? तो और इस फील्ड में यही एक सबसे बड़ा फायदा है। आप क्या करते हो कि आपको नया नया चीजें सीखने को मिलती है, आपको एक्सप्लोर करने का बहुत चीजें मिलता है, आपकी लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। आप एवरीडे यू फील कि यू आर बेसिकली यू हैव सम वैल्यू इन द मार्केट कि और आईटी हमेशा अभी तो बूम है ही है, लेकिन अगर कुछ होता भी है तो आप अगर अपने आप को जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या उससे है, और नॉट जस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, व्हेन यू हैव सम एक्सपीरियंस, लाइक आई हैव 7+ ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ Amazon, राइट? तो अगर मुझे कोई न्यू टेक्नोलॉजी देता है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैंने वो टेक्नोलॉजी पहले से पढ़ रखी। आई ऑल्सो हैव टू लर्न, बट द एक्सपीरियंस विच आई गॉट, the person like who is actually is fresher, the way they look that problem and the way I will look that problem, it's completely different, right? I will see completely कि इसमें क्या हो सकता है. I will probably go for the design doc, I will probably go for the requirement phase, just discuss with so many with so many people, just try to come out like is it really necessary to build or not. So basically, but for the freshers, they don't have that experience, they don't know like what exactly could happen if they just simply build it, right? So they will just simply go and build it. So that's the experience like people are, the companies are demanding for, and you have that experience. So it doesn't matter like 10 साल बाद आप outdated हो. No, you are not outdated. You are learning everything every day. और आपका 10 साल बाद जो 10 साल का एक्सपीरियंस है वो किसी के पास नहीं है. सो ये चीज बहुत ही ज्यादा और बहुत इंपॉर्टेंट. आई डोंट नो लाइक रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक ओके इट्स गोइंग ऑन, ओके दैट्स गुड. सो या सो दैट्स द, मेरे ख्याल से मेरे क्वेश्चन आंसर्स कुछ ज्यादा लंबे हो जाते हैं बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्रेस एवरीथिंग सो दैट लाइक एवरीबॉडी नोज कि क्या होता है इंडस्ट्री में, प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है, क्या फीलिंग होती है जब आपको सिलेक्शन मिलता है कंपनीज में, तो क्या फीलिंग होती है. And believe me, like first of all, like when I got selected in the college, my dream college, I started crying. I just saw my result so basically there was like I was just trying to enter my roll number, and at the time there was a huge traffic. I was not able to get into the servers or something. So and I just got a call from one of my friend. Hey, you got selected. I was like, are you kidding me? He said, no, you got selected, and I was like, dude, really? I started crying. So that time, even after getting job, that is a different feeling. But जब आपको वो feeling फिर भी मैच शायद नहीं कर पाए, वो मेरी extreme feeling थी. And when you tell your family, hey, I got selected in this college, and जो वो प्राउड मोमेंट होता है, बेसिकली वो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मैं सोचता हूँ कि भले ही मैं जितना भी अर्न करता हूँ, कैसी भी मेरी अभी लाइफ स्टाइल है, डजंट मैटर, बट मेरे जो बेस ग्राउंड है वो बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम द टुडेज वर्ल्ड, राइट? अभी अभी ऐसा होता है कि जैसे you get everything, like you have all kind of luxuries and all. At that time, like at my place, लाइट भी नहीं हुआ करती थी यार. 10 घंटे की लाइट आती थी. अब 10 घंटे की लाइट में फिर उसके बाद में मेरे हाई स्कूल इंटर में हमारे घर इन्वर्टर भी नहीं हुआ करता था, तो आप लालटेन जला रहे हो. अभी मैं जब यहाँ पे लोगों को बता रहा हूँ कि लालटेन, पहले पूछे लालटेन क्या होता है, लाइक ओके लेट मी टेल यू व्हाट इज लालटेन फर्स्ट, ओके. तो आई एम नॉट सेइंग मैंने स्ट्रीट में पढ़ा है, आई एम नॉट सेइंग दैट, ओके, बट आई एम सेइंग कि हमारे पास वो चीजें नहीं थी जो कि लोगों को मिली. और yeah, okay. Yeah. Okay, so basically I was just saying there was network issue. So yeah, that's fine. So I was saying कि like you at that time ऐसा होता था, वही मैं बता रहा था कि like कि अगर किसी को बताते हैं लालटेन में, लालटेन, there was a thing which called लालटेन and like we used to study under that like a light, तो उनको सरप्राइजिंग लगता है. आजकल लोग उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए पैसे पे करते हैं. I'm saying like ऐसा भी होता है कि like ठीक है, they want to get the experience of that, they will go in some village and they will pay for it, they will book some resort and they have that kind of experience over there, जहाँ पे ठीक है देखेंगे बैलगाड़ी, देखेंगे ये देखेंगे वो देखेंगे. मुझे लगता है भाई मतलब इतना पैसे देके क्यों कर रहे हो इससे सारी चीजें, बट दिस इज वेरी फैमिलियर टू अस क्योंकि हम उस ग्राउंड से. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि हमारा ग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था. एंड लाइक व्हेन यू get to know about something which is out of the box, right, which nobody could have imagined कि ऐसा हुआ या ऐसा हो सकता है, and that kind of moment, right, it's completely different. Not just that actually, like उसके बाद में
लोग ऐसे ऐसे लोग आपसे इंटरेक्ट करना की कोशिश करेंगे जो आपसे बात नहीं करना चाहते थे। आपके रिलेटिव्स के टोन बदल जाएंगे, आपके मतलब कंप्लीटली एक डिफरेंट एरा में आप आ जाते हो, फिर लगता है अच्छा ऐसा भी कभी कुछ हुआ था। तो बहुत सारी चीजें चेंज होती है इसके साथ में, और ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए, और आई विल से कि यू शुड चेरिश ईच एंड एवरी मोमेंट। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि do you want to, what exactly you want to change, like if I give you opportunity to go back in time, I will say I don't want to change a single thing. Why? मुझे सब एक्सपीरियंस, जितने भी मेरे एक्सपीरियंस थे, आई लव्ड ऑल दोज एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, राइट। और वो मुझे मुझे मेरी बेस वैल्यू सिखाते हैं, वो मुझे बताते हैं कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, और व्हाट वाज माय बैकग्राउंड एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर एट दैट टाइम। सो तो मुझे चीजें, इट्स नॉट लाइक आई कांट इमेजिन दोज थिंग्स, राइट, आई कैन इमेजिन दोज थिंग्स। आई ऑल्सो नो लाइक हाउ पीपल, like whoever lives there, like, or whoever is going through that situation, how difficult it is for them, right, to basically live in that particular condition. तो ये सारी चीजें हैं। so yeah, that's basically I was just trying to tell कि क्या चीजें difference आती हैं when you get to know about something, and when you basically get into the college, और उसके बाद में आप जब आपका सिलेक्शन होता है, आपको पैकेज मिलता है, उसके बाद यूएस मूव हुए, कैसे मूव हुए, क्या मूव, उतना एक्साइटमेंट लोगों को नहीं रहा। ठीक है यूएस में, अच्छा ठीक है लड़का यूएस जा रहा है। लेकिन उसके पहले के जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट, मतलब मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी लोग, अगर कोई सुन भी रहा है या जो भी लोग सुन सुन रहे हैं, जो कि इंटरेस्ट, जो अभी तक की रिकॉर्डिंग देखे हैं, कि प्लीज जस्ट फोकस ऑन योर करियर। अभी तक जो हुआ हुआ, कोई मैटर, परसेंटेज कोई मैटर नहीं करता, एज आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई एम द, लाइक, आई हैव लिव्ड दैट टाइम, राइट, एंड आई एम द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट। और और लाइक ट्रस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट नहीं अपने आप पे, अपने ऐसे ऐसे लोग पे जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, जैसे जैसे मैंने कहा नितिन सर, बहुत ही मतलब, वो जब क्लास में आते थे तो यू आर लाइक सर कितने काम है, मतलब लगता था, मतलब दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन यू गेट, राइट, फ्रॉम देयर। तो अगर ऐसी चीजें आपको मिल रही है, आप पूरा उसको यूटिलाइज करो। आपको बहुत सारी, और लाइक आई थिंक बहुत सारे लोग, आज बहुत सारी अवेयरनेस फैल चुकी है, बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। मुझे तो कैरियर के बारे में नहीं पता था, इस कैरियर के बारे में नहीं पता था जिसमें मैं अभी अभी हूँ, वेयर आई सक्सीडेड। तो आपको अवेयरनेस है स्टार्टिंग से, और अगर गाइडेंस अच्छी मिल रही है आपको, व्हाई नॉट जस्ट यूज इट, राइट, यूज इट इन द राइट डायरेक्शन, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड, राइट। और कोई जरूरी नहीं है कि इस फील्ड में कि आपको टॉप होना जरूरी है, नहीं, आपको बस सिलेक्शन लेना जरूरी है। आप सिलेक्शन ले लिए, आप एवरेज स्टूडेंट हो, इफ यू आर ए सर्वाइवर, if you can just prepare for, like what the people are asking for, you are good. Like you don't need any extraordinary talent over there. So if you are a survivor, you are good. Yeah. Actually, I got a similarity between you and me. ऐसे ही होता है, पहले मुझे एग्जांपल्स मिलते थे, फिर मैं एग्जांपल बन गया। यही होता है। अब एग्जांपल्स, फिर लोग आएंगे, अच्छा तो कैसे प्रिपेयर किया, पूछेंगे लोग आएंगे पास में, अच्छा तो भैया, मतलब, एंड योर फैमिली इज आल्सो वेरी प्राउड अबाउट इट, टू टेल अदर्स कि देखो ही इज माय किड, they will start introducing। पहले ऐसा होता था, आप कोने में, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, but now people will start talking about you first। they will tell okay now he is basically studying over there, और ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और फिर लोग पूछते हैं, लोग वो भी मोटिवेट होते हैं इस चीज से। और आप अपने लिए नहीं मोटिवेशन क्रिएट करते, जब when you get into that basically when you crack something, any India level exam when you crack, वो मोटिवेट आपको अलावा और लोगों को भी मोटिवेट करता है। और बहुत ही लोगों को, मुझे देखा देखी बहुत सारे लोग उस फील्ड में आए, उस फील्ड को परफॉर्म किया, एंड दे आर डूइंग रियली गुड। सो एंड आई एम आल्सो ग्लैड कि लाइक दे फॉलोड दैट पाथ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एंड ऑल, दुनिया पीछे पड़ी है। जब आपका कोई एग्जाम होता है, एक कोई इधर कोई रिसेंट एग्जाम हो रहा था, ऐसा था कि मुझे अभी याद आ रहा है, क्योंकि मैं अभी इंडिया में गया हुआ था रिसेंटली,
और किसी ने मेरे से बोला कि अब शायद कुछ लेखपाल के पेपर से पैट पहले कोई एग्जाम, एक या पेपर या देना होता है। तो मैंने पूछा कितने लोग टोटल उसको भरे, बोला 37 लाख फॉर्म आए। हमने कहा 30, मतलब जस्ट इमेजिन द क्राउड, जस्ट इमेजिन लाइक हाउ मेनी पीपल आर फाइटिंग। और वो या भी वो कंपटीशन एग्जाम नहीं था, वो उसकी इट वाज लाइक अ प्री एग्जाम टू अपीयर इन द फाइनल एग्जाम। या और उसमें इतना सारा, तो सोचो वो क्राउड वर्सेस दिस क्राउड, this is a dream job here, you are getting opportunity to get exposure of everything। तो opportunity ऐसी to चीजें, get growing throughout your life. या एंड यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। जैसे कि अब यू, अच्छा लोग मेरे से एक चीज और पूछते हैं कि आप यूएस मूव हुए, व्हाट द डिफरेंस यू फाउंड इन यूएस, राइट? तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन अभी बस मैं बता रहा हूँ ऐसा आंसर, मैं इसको ट्राई, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली टेल कि व्हाट्स द डिफरेंस हियर, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि इफ यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन व्हाट यू कैन एक्सपीरियंस। Again, I'm not advocating, I'm just trying to giving a warning, or I'm not advocating someone to move to US, or I'm Yeah. not comparing India and US, because India is India, US is US. You US. can't compare both the country. It's like you are comparing apple versus banana or something like that. So Yeah. I'm not saying to compare any, but I'm telling you that sometimes you have some dreams, right? So for example, like you are very interested in basically driving a like a sports car or something, or a high end car, those kind of things you can easily achieve here। यहाँ पे आप 50 लाख की गाड़ी आराम से खरीद सकते हो। टेस्ला $70,000 में लगभग आपके 56 लाख में आ जाती है। और टेस्ला इंडिया में कौन चला पाएगा? पहली चीज तो इंडिया में अफोर्ड नहीं कर पाओगे। और Then अगर roads. Awesome रोड, roads we have. उसके बाद में हमारी गाय, जो गाय माता है वो भी आती है सामने, और वो सब आता है, उसके लिए टेस्ला नहीं बनी हुई। तो हम चल जस्ट अगर आप टेलिंग, ले रहे हो तो 50-60 की स्पीड में चला रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप चलाओ 50-60, लेकिन कम से कम टेस्ला की जो मेन फीचर है, जैसे कि आप ऑटो पायलट काइंड ऑफ थिंग्स, या आप Yeah. जस्ट सेट अ डेस्टिनेशन, यू सेट एंड रिलैक्स एंड यू डोंट इवन हैव टू बेसिकली होल्ड द स्टीयरिंग। और वहां पे तो आप, you can't achieve it. Having a Tesla in India, it's completely different thing. Maybe in future it will come, maybe something. But I'm just telling you कि ये सारी चीजें आप यहाँ पे जी सकते हो। Like you get a car, you can get a car, you can go visit all the places wherever you want. So infrastructure wise, definitely this is advanced country. तो आप you can get experience, get to experience all those things, right? उसके बाद में there are few things definitely you can't compare, as I mentioned, family thing, right? तो family, your family lives in India, so वो एक बहुत ही बड़ा वो होता है कि लाइक ठीक है मेरी परिवार वहां पे रह रहा है, मिलना कम हो पाता है क्योंकि आप बहुत जाओगे, पूरे साल में एक बार जाओगे, मैक्सिमम आप 2 बार जाओगे। पैंडेमिक आ गया बीच में, सो लाइक दैट 1 year कन्वर्टेड इनटू 2 years, so that's part, that's the lacking part. The second part is like which I will say lacking is like जैसे यहाँ पे क्या होता है, नॉट लैकिंग, मैं अगेन लाइक वहां पे क्या होता है कि वहां पे आप डिपेंडेंट होते हो ज्यादा लोगों पे। जैसे जैसे कि कुछ खराब हुआ, बल्ब, इवन बल्ब चेंज करना हुआ, भैया इलेक्ट्रिशियन वाले भैया को बुलाए, वो बल्ब चेंज करो भैया। आई एम जस्ट टेलिंग यू वन एग्जांपल। कुछ हुआ, कोई पता है लोकल में, वो आएगा सही करेगा, क्योंकि वहां पे लेबर प्राइस जो है वो चीप है। वहां पे आप कुक रखते हो, आप मेड रखते हो, यहाँ पे ये सब चीजें चीप नहीं है, तो लोग उतना रेगुलर अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये अच्छी चीज भी है कि इससे 2 फायदे होते हैं। एक चीज जो डिफरेंस है लेवल में, जैसे वहां पे लेबर क्लास में डिफरेंस और किसी वजह से जो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है इंडिया में, Yeah. Yeah. ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चीज बहुत ही नैरो है। तो इससे अगर ये चीप नहीं होगा तो जो भी है, जो भी लेबर क्लास में अगर काम करते हैं, तो वो भी दे आर getting a very good amount of basically money कि वो they can survive in today's जो भी हमारा today's world, जो भी जिस तरह से एक्सपेंस है उस तरह से सरवाइव कर लेते हैं। और ये आपको इंडिपेंडेंट बनाता है कि आप हर छोटी चीज पे दूसरों पे डिपेंड नहीं होगे, अपना खुद का खाना बनाओगे। देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, लाइक आपको डिश वॉशर होते हैं आप बर्तन धुलने के लिए, लेकिन एटलीस्ट दिस गिव्स यू बेसिकली इंडिपेंडेंसी की आप कर सकते हो, आप खुद से करो, आपको कुछ भी करने पर वॉल पेंट करना है खुद से करते हैं, कुछ वायरिंग करनी है खुद से करते हैं। आई एम जस्ट सेइंग अप टू दैट लेवल पीपल डू, एंड दे बेसिकली गेट it's like a you get to learn a lot of thing in this area as well। तो ये भी एक फायदा होता है, लेकिन बस वही चीज है, कभी कभी लगता है कि भाई वहां इंडिया में होते हैं यार, बस
ठीक है 100 रुपए देते काम हो जाता अपना। हम जस्ट टेलिंग यू। तो वो सारी चीजें डिफरेंस होती है। अच्छा, यूएस में रहने का एक फायदा और होता है कि जब व्हेन यू गेट लाइक मनी इन यूएस करेंसी, ओके, एंड व्हेन यू गो बैक टू इंडिया, you don't hesitate to basically spend money. You can have a luxury hotel. You can spend your holidays days in India with a in a very luxurious hotel without even hesitation, right? वो सारी चीजें यूज में भी कर सकते हो, बट आई एम सेइंग लाइक India is your home country. You will definitely be visiting there. Why not just get that experience if you want to get exposure of that? Basically, if you want to get experience of that, why not just go there और वहां पे वो एक्सपीरियंस करो जो कि यहाँ पे जितना आप नॉर्मल में स्पेंड करोगे उससे कहीं सस्ता पड़ेगा, और वो लग्जरी आपको लेने में। तो मैं बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू जस्ट टेल दैट कि क्या मेंटालिटी चेंज होती है लोगों की, क्या डिफरेंसेज होते हैं, और कमियां भी बता रहा हूँ कि क्या कमियां हैं। आप घर को बहुत मिस करते हो कभी कभी। बहुत सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम 4-5 साल के लिए जाएंगे, उसके बाद मूव भी कर जाते हैं। बहुत सारे लोग डिसाइड करके आते हैं कि हम 4-5 साल रहेंगे, उसके बाद मूव करेंगे, लेकिन यहीं रह जाते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से होते हैं। ये सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है, अपनी सिचुएशन होती है। इंडिया में भी आजकल बहुत पैसे मिल रहे हैं, जस्ट टू बी फ्रैंक, लाइक बहुत ही मतलब आई नो पीपल, आई नो सम सैलरी स्ट्रक्चर। तो बहुत ही अच्छी सैलरी इंडिया में भी मिलती है और सेविंग भी अच्छी हो जाती है। तो इट्स नॉट लाइक यू मस्ट हैव टू कम, बट इट्स अगेन लाइक योर चॉइस। इफ यू वांट टू बेसिकली एक्सप्लोर समथिंग, इफ यू वांट टू विजिट समथिंग, why not just come here, visit, experience it, and if you don't like it, just go back, right? So that kind of things are always there, but yeah. So, like, what kind of work culture is there in Amazon? Like, Okay. what difference do you find in work culture in India and in USA? So like I was part of like Amazon India and Amazon US both, and for me actually I will say I did not find much difference, like like in whatever team I was, um, in terms of the team culture. In Amazon, actually, one good thing is each team is different. Each team is like a startup to you, right? So, and the good part was like if your leadership are good, right? Like that's the what happened with me. They were really good. You can basically tell them whatever you like to work on. You can propose. You can basically discuss anything with them. They will not mind it. They will they will simply encourage you. They will give you opportunity to basically work on things like wherever you want to work. You will have a lots of growth opportunity. एक एक थोड़ा सा ये है लोगों में कि अमेजोन में काम बहुत करना पड़ता है. You might have also heard about it. I will say it also it also depends on you. When I say depends on you, that means nobody is gonna force you to work from like 10 a.m. to like 10 p.m. right? कोई डेडलाइन होती है, you commit. It's not like they are committing the deadline, you are committing the deadline. You will say, hey, I will able to deliver by this date, right? Now something happens, some blockers comes in. Now you will tell, hey, I'm going to now, due to this blocker, this has moved to 15 days, I'm gonna deliver by after 15 days. Now something happened again, if your estimation was not good, and again you extend for more 15 days, then you get pressed. It's not like they are pressurizing you. You are basically getting pressure on yourself कि देखो यार 2 बार तो मैंने एक्सटेंड कर दिया, तीसरी बार एक्सटेंड करेंगे तो कितने कैसा लगेगा, राइट? तो फिर आप क्या करते हो, 10 काम करोगे, जल्दी काम करके हम डिलीवर कर दें। लेकिन इट्स अप टू ऑन यू। अगर आप उस चीज को अकाउंटेड पहले से आप उसको आप देख लो कि जस्ट हैव अ बफर, राइट? कि अगर इतना टाइम लग सकता है, व्हाई नॉट जस्ट हैव सम बफर फॉर दोस ब्लॉकर। अगर कुछ ब्लॉकर आते हैं, जस्ट कम्युनिकेट प्रॉपरली and then give a new timeline with a new buffer, right? So and like if something is extremely out of our hand, that's a different thing, but most of the things are not so. तो उसमें आपका क्या हुआ, आपने सिंपली आपने अपने आप को प्रेशराइज किया, आप 10 से 10 काम किए, उसके बाद आपने कहा अमेजोन में बहुत काम करना पड़ता है। अमेजोन में एक चीज तो है लाइक कि आपका काम नेवर एंडिंग वर्क है। व्हेन आई से नेवर एंडिंग वर्क, दैट मींस इट्स नॉट लाइक कि आपको हमेशा एक काम किया और उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं। A set of tasks are there. Pick whatever you want and start working on that. So many, and whenever you basically you will become senior,
आपके जूनियर्स बहुत सारे होते हैं, आपको टीम लेके चलना होता है, आपको देखना होता है कि टीम के में जो भी सॉफ्टवेयर क्वालिटी है, जो भी टीम का ओवरऑल स्ट्रेंथ है, वो कैसे मेंटेन किया जाए, क्या किया जाए। तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। और और अगेन सब रोल की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मेरे रोल से अलग एक्सपेक्टेशंस है। मैं जब जूनियर हुआ करता था, मेरी अलग एक्सपेक्टेशंस हुआ करती थी। तो अब तो वो हर रोल के अलग एक्सपेक्टेशंस, एंड विद द एक्सपीरियंस पीपल लर्न फ्रॉम इट। और वर्क लाइफ कल्चर, अगेन एज आई मेंशनड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बहुत सारे लोग की वर्क लाइफ कल्चर बहुत बैलेंस है, बहुत सारे लोग उस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आप just learn from your failures and just try to basically do your best in the next thing, right? So yeah, that's about it. The difference between the US culture and India culture, for me there was nothing difference actually, and to be frank, क्योंकि हम मतलब मुझे जिस टाइप का लीडरशिप वहां पे मिली, सेम काइंड ऑफ लीडरशिप आई गॉट इन यूएस एज वेल. That's the beauty about Amazon actually. Like it's not like you are, there will be some difference, definitely there will be some difference. जैसे कि इंडिया में ऐसा होता था कि like whenever you are in India you will say just a second, sorry. So yeah, whenever you are in India ऐसा होता था कि बहुत हम पहले बैचलर हुआ करते थे, राइट? तुम जब बैचलर हुआ करते थे, ठीक है, 10 से बजे, बहुत ही रैंडम टाइम हुआ करता था, 12 बजे आ रहे हैं, रात के 12 बजे तक काम कर रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं वहां। यहाँ पे अमेजोन में एक चीज है, टाइमिंग कुछ नहीं है। लाइक कि आपको बस टास्क दिया है, आपको उसको करना है, कितने बजे लॉग इन करते हो, लॉग आउट करते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी टीम में 2 लोग ऐसे थे, एक बहुत ही अर्ली मॉर्निंग के थे, एक बहुत ही लेट के थे। तो हम उनको ऐसे बस जस्ट मजाक में ऐसे बोलते थे, ये सर्विस 24 आवर सर्विस, मतलब 24 आवर का सपोर्ट देती है। क्योंकि जब उनका लॉग आउट होता था तब उनका लॉग इन का टाइम होता था। तो ऐसे होता था। लेकिन to be frank, there was not much difference I found between US and India, because I was working in Amazon only. Before Amazon, actually, I did internship in one of the company. That name is like PayU. I don't know, like if you have heard about the PayU payment company. So I was in Gurgaon for 6 months. I did my internship over there. वो 6 month का internship था मेरा, लेकिन just after that, like I already had offer at that time. तो और उस time पे I also got opportunity to basically do the internship from Amazon. But I was discussing with someone. Someone said like Amazon में anyway you have full offer. Why not just get experience of some other company so that you also can compare the culture and all. So, and I'm glad that I followed that instruction. Now I know at least the difference, at least even like I was just 6 months in that company, but at least I can tell like what kind of people were there, like what kind of mindset was there, and what kind of mindset like are people working in Amazon. तो ये सब बहुत ही डिफरेंस, मतलब वो आपको पता लगता है। तो बस यही है, बाकी तो again, like to answer your original question, there was not much difference for me to work in India versus US. Ashwath, so let's come to the most awaiting question of the video, like जिसका बहुत सब लोग ज़्यादा से इंतजार कर रहे थे, salary. Okay, yeah. Yeah. Okay, let me tell you at this point, just say like as I mentioned, I'm working as a senior software engineer, right? I will not, some things are confidential, so I will not be exactly telling कि क्या मेरी exactly salary है, but I will tell you the range जो कि publicly available है, and like, and I am telling you because uh, I am on that place, so that number is true. So basically, like up to my level, like easily getting like 2 crore to 3 crore is easy. Okay, so that's the like motivation if you want to get to basically get into the company, or like get into pursue MCA. I will say just go for it. Like, and when I got selected, like I started with like around 24 to 30 lakh of package, and then, and like again as I mentioned, like in you grow, and I'm talking about 10 like 7 years 8 years back of things, right? Things have moved a lot. और इंडिया में भी आपको लाइक अप टू माई लेवल लाइक 1 करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेज मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए आई वाज जस्ट आई विल जस्ट आई जस्ट गिव यू द नंबर, लाइक द रफ नंबर, लाइक हाउ द पैकेज वुड लुक लाइक इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस, एंड इफ यू, एंड इवन इफ यू आर फ्रेशर, राइट? आपको इंडिया में जैसे आप फ्रेशर की तरह ज्वाइन हो, 1-2 लाख आराम से मिल जाएगा वहां भी, कोई मतलब नो हेजिटेशन टू गेट लाइक इन मोर देन 1 लाख रुपीज प्लस शेयर्स एंड ऑल दोस थिंग्स प्लस सम अदर थिंग।
और वो मैं 5 साल 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो अभी तो थोड़ा और बड़ा ही होगा। और ग्रोथ में ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी, आई विल से लाइक कैसे डबल होती है, ट्रिपल होती है, 4 टाइम होती है, यू विल नॉट इवन रियलाइज इट। और एंड इट विल हैपन, राइट। एंड और मतलब मैं जब सिलेक्शन लिया था तो मैं ऐसे सोचता था कि 5 साल में मेरे पास इतने होंगे। बिलीव मी, लाइक आई वाज कैलकुलेटिंग दैट नंबर, I had like way more than when I basically completed my 5 years. I basically tried, I was able to complete some of my dream thing up to that point once I completed the 5 years. So lots of basic thing which I wanted to do, I already completed in 5 years. So now I can really focus on myself. I can live uh, whatever I want to do next, and it's not the base thing, it's beyond that, right? So those things I can do. But yeah, I think if that's the motivation people want, then yeah, just up to my level, even I have 7 years or 7 year of experience, getting 2 to 3 crore is not that hard. You will easily get it. So yeah, again, this is market, this is open market, lots of opportunities there. You can get even beyond that. It's up to you, right? But yeah. Okay, so Shashwat, I have one last question. Like, you can call it a myth, or it's a myth or not. You will be better person to tell. Like, there are people who tell that there is something called age factor in IT industry. Like after a certain age, you will stop growing. Like 40 years के बाद लोगों को हायर नहीं करते, या फिर मतलब उतना ज्यादा वो नहीं रहता है, मतलब फ्रेशर्स को ज्यादा चांसेस मिलते हैं. एंड या आई होप यू I गॉट will द say, क्वेश्चन. या yeah, I got the question. मैं तो बोलूंगा वो myth है, मैं या example देता हूँ उसका. I have like so many examples of that. Okay, what Amazon is doing, I can only talk on behalf of Amazon, or like basically I'm not basically talking behalf of Amazon, but I'm just saying I am giving my perspective of seeing things in Amazon. Amazon have lots of actually programs. So in one of the program, what they offer is like, if anyone who does not has a computer background, right, the computer science background, they can get trained for it. They basically provide resource. There is a lower bar for them to get the internship in Amazon. They get the internship, and if they have enough potential, because they have the leadership, there is no issue with their the other qualities. They can grow fast, right? The only thing they are lacking is the technicality. So if you are able to train them, and if you are able to basically help them to understand those things, and if they are able to do it, they simply hire them, right? And and there is no age that matters. Even in my team, I remember like there was a person, when he joined, he was almost 45 years, and he was not, I will say he was like 50 years old, and he was on that level where I was. Just imagine, like I was just like 26-year-old, 27-year-old, and he was uh, like 50 years old, and we both were just on the same level. So and both were like, it's nobody care about the age here. That's the beauty about it. If you have some quality, if you have things, it's not like कि fresher है ठीक है तो उनको मैं ज्यादा अपॉर्चुनिटी दूंगा. उनके लिए क्या फर्क पड़ता है? उनको तो बस काम से मतलब है, राइट? अगर कोई है जिस 40 साल का है, 50 साल का है, वो उससे अच्छा काम कर लेता है जो कि 20 साल का है, तो ऑलवेज वही उसी को मिलेगा. डजेंट मैटर कि अगर दोनों सेम लेवल पे हैं. और मिलने की बात नहीं है, वो आपको खुद ही अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप खुद ही दिखाते हो शो के. काम सबके पास रहता है. एक काम को हैंडल करने के 50 तरीके, एज आई मेंशन, एज अ फ्रेशर हाउ यू लुक एट अ प्रॉब्लम, एंड विद एक्सपीरियंस हाउ यू लुक एट अ प्रॉब्लम. सो अगर आप इवन सेम लेवल पे भी हो, आपके पास ऐसा तो है नहीं मुझे लगता है उस 50 ईयर जिसमें मैं बताया, 45 ईयर 50 ईयर जिसने ज्वाइन किया था, he had other kind of experience, other industry experience, and he was able to put all his experience, right, and which you cannot compete. भले ही वो आप सेम लेवल पे हो, लेकिन you cannot compete. And even like अगर compete भी कर लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो काम है, सेटअप टास्क उनका अलग. यहाँ पे कंपटीशन नहीं है. देयर इज नो कंपटीशन की नहीं हम आपके पैर खींच के हम आगे बढ़ेंगे, राइट?
everyone has a growth opportunity. Everyone will get promoted based on their work. It's not like there is only one work, either you do or you do, and we both are fighting for it. It's not like that. There are I'm telling you, there are so many complex problems are there, and we don't have time for to कि नहीं ये सब चीजों के लिए. So I will say it's absolutely a myth. I don't have any other experience like outer world experience like out of this company, so I cannot say about others. But inside, like within Amazon or like जो जिस कंपनी में अभी तक काम करता हूँ वहां पे कोई इशू नहीं है. मैंने ऐसा कोई भी एक सिंगल केस नहीं देखा जिसकी में ऐसा कुछ हुआ हो. और इवन be strongly basically oppose those things जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की ऐसा इशू आता है, जैसे in terms of race, in terms of like age or anything like either you are a girl or boy, like any kind of कोई भी कहीं भी कुछ भी difference अगर कुछ भी लगता है तो Amazon is very strict about it. They will simply terminate their like basically job or something, like whatever they have, whatever relation they have within Amazon, because they don't tolerate the behavioral thing. And you can't teach someone about the behavioral thing, right? Like, because you know the policy. If you are not following the policy, then you are not meant for the company, right? And it's very strict. Everyone should follow that, and everyone should respect that. That is how you will maintain it. Otherwise, if we give a like, okay, I will give you a warning. If there are like 1,000 people, all the 1,000 people start doing those things, you will give 1,000 warning, but 1,000 incident have happened, right? So how you are gonna stop it? So उसकी वजह से it doesn't matter. Company don't tolerate these kind of activities. और अगर कहीं से भी कोई ऐसा बोल दिया कि ऐसा हुआ है, there is a huge set of things that happens in the background. वो HR को जाएगा, HR के बाद में डायरेक्टर जाएगा, VP जाएगा, escalate होगा, बहुत सारी चीजें अंदर होती है. और even at the end, अगर someone found guilty about it, their employment will be terminated. Okay, Shashwat. So at last, I want to give you a situation like there are students like me. Like I'm in second year of my masters, and I'm in currently in third semester, and like there are 8 to 9 months remaining for our placements. So, what advice you would give to us, like student like us, to like crack a company like Amazon? And like there are many students who are not very much focused on competitive programming, and they are very much interested in development or some other field like data science and other things like. So for these 9 months, they should focus on competitive programming, or what should be the preparation strategy for those students? Like, what would you advise? So first thing I will say, Amazon is not the end of the world. Okay, there are definitely other companies are already there. So Amazon has a setup bar, right? Like I think everyone already know. I don't need to tell like people कि देखो Amazon में ऐसे तरह के question आते हैं. I also take lots of interviews. I also know कि क्या यहाँ के जैसे क्या चाहिए इनको, right? तो अगर उसमें there is no compromise with the bar we have, right? अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि there is a requirement कि आपको data structure algorithm आनी चाहिए, आपको you should have good problem solving skill, you should have good leadership principle examples and all those things. अगर ऐसे requirement है और if you're not meeting the bar, then you are not meeting the bar. So first of all, just look at all the problem. Like I will say in 10 months, it's not very late actually. Even in 10 months, you can try कि क्या पूछते हैं, right? Because you have like thousands of examples कि क्या पूछते हैं, and just see कि like are you able to answer those questions? Or do you have examples for that? Or agar for some reason, if you're not prepared for that, again, as I mentioned, Amazon is not end of the world. Even like, or not even Amazon, Microsoft, Google, and all. अगर आपको लगता है कि आप उनके क्वेश्चन के हिसाब से नहीं प्रिपेयर हो, for some reason, there are other companies, right, who are not asking you those kind of questions, right? Who are just asking the relevant technology, the relevant thing, and you will always have opportunity to jump in these companies, right? So
So even if you are not getting good companies, or like any startup you are able to get and all those things, don't feel yourself कि मैंने कुछ नहीं achieve किया. You achieved whatever you were supposed to. You did that job and you did it tremendously well, right? The only thing is you should not stop it. Just focus for the next thing. What else is required in order to come basically crack this particular interview. Now you have just 7 to 8 months. I will say the people who already have exposure to the competitive examining and already gave have solved lots of problem, or not even, or like if you have a good understanding of the problem and how to solve the problem, even if you are not participating in competitive exam, or like programming, I'm talking about the competitive programming, you can still focus on all the questions, just try to solve it. You will it's 8 months is too, like it's too much to get prepared for that, right? Uske baad mein jab just focus on the questions, the programming questions. If you are able to basically, when you feel confidence in that, then you should start focusing on the other part of it. और अगर आपको लगता है कि आप कम्पिटिटिव उसमें थोड़ा वीक है, तो आप दूसरा पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करो. आई मीन when I say दूसरा पार्ट, that means ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, क्योंकि सब कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है. हर कंपनीज में आपको कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चीज पूछें, सबकी अलग अलग तरह से हैंडल करते हैं. किसी को डेटा इंजीनियर चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग वन रैंडम एग्जांपल, वो एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चन को क्वेरीज पूछेंगे. कोई आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नेटवर्क में रिलेटेड है तो आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सिस्को एंड ऑल, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड पूछ लेते हैं क्वेश्चंस. तो किसी का ऐसा नहीं है कि आप किसी फील्ड में स्ट्रांग हो तो आपके लिए और इधर कंपटीशन में ही हो तो आपके लिए कुछ नहीं है. आपके लिए सब कुछ है. आपके बस इट जस्ट लाइक, हो सकता है आपका ड्रीम कंपनी ना हो सकता है वो, लेकिन उसके लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है. आप, एज आई मेंशन, कॉलेज में मुझे लगता था कंपटीशन बहुत ज्यादा, और दैट वाज ट्रू. बाहर आपको उतना कंपटीशन है. कॉलेज में होता है कि उनको 3 लोगों को लेना है. 800 बच्चे पार्टिसिपेट किए, पहले ही छाड़ दिया, उसमें 40 निकाले इंटरव्यू के लिए. 40 में फिर वो करते 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 वो 3 को लिए, राइट? बाहर ऐसा तो है नहीं. आप अकेले अप्लाई कर रहे हो, उनको एक रैक है, उनके लिए उसमें बाद 10 एप्लीकेशन है, 20 एप्लीकेशन है, सबको इंडिविजुअली वो करते हैं. अगर उनको लगा कि बार हाई है, बंदा कुछ परफॉर्मिंग वेल, तो उनकी टीम में रैक नहीं होता तो दूसरों को रेफर कर देते हैं, वो ले लेते हैं इन द सेम इंटरव्यू. तो ये सब चीजें होती है. और बाहर का मैं ये नहीं करता हूँ बाहर हाई है बाहर लो है, बाहर दूसरी चीज भी आप में ऐड हो जाती है. जैसे आप एक्सपीरियंस के साथ जाते हो तो वहाँ एक्सपेक्टेशन कुछ और दूसरी टाइप की एक्सपेक्टेशन आपसे हो जाती है कि बिहेवियरल जो क्वेश्चंस है आपके, या जो इनके लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, उसमें आप ज्यादा स्ट्रांग हो. कम्पिटिटिव एग्जाम में भी, सॉरी, आपका प्रोग्रामिंग में कोई डीपी नहीं पूछता आजकल. मतलब अमेजोन में डीपी यूपी नहीं पूछते हैं, टू बी फ्रैंक. कोई पूछ रहा है, दैट्स देयर चॉइस. लेकिन डीपी एंड ऑल is something people avoid, but like recursion and all is very common. It's like whatever they can basically offer you to basically ask you to basically understand how how are it, like basically to just understand your problem solving skill. That any type of question they can ask, it's related, it's not necessary to be very hard dynamic programming, greedy problem and all those things, abstract problem, like जो भी वो बहुत ही लंबे लंबे एल्गोरिथम एंड ऑल, कोई जरूरी नहीं वो पूछे जाएं या कोई पूछे आपसे. बहुत ही सिंपल बेसिक, अगर आप इंटरव्यू के भी क्वेश्चन देखो तो बहुत ही, आजकल के इंटरव्यूज के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बेसिक पूछते हैं. वो बस उसी में आपको ग्राइंड करते हैं, उसमें बेस इतने घुस जाते हैं कि आप, हो सकता है उनको जो चाहिए वो आप ना दे पाओ, इसीलिए आप निकल जाओगे. लेकिन कभी कभी एक सिंपल मैप, अगर आपसे ये बोल दें ठीक है एक मैप, डोंट यूज द मैप एज बेसिकली लाइब्रेरी, and just build your own map, right? अगर ऐसा वो बोलते हैं, फिर उसमें पूछेंगे ठीक है कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लोगे, ऑर्डर 1 है, क्या है, कैसे है. तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और उसमें आप नहीं बता पाते हो, तो इट्स नॉट लाइक समथिंग आउट ऑफ the box they are asking. They are only asking about your data structure and algorithm. And if you are good into this, you can get selection. If you are not, then yeah, just prepare again. There will be definitely so many opportunities, you can get it again, right? Like just get another interview after some time, maybe after a year. Once you are working in some other company, you can again apply.
and just get the same company, your dream company again. So अभी 8 महीने में इतना फोकस करो, व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग थिंग, राइट? एक उस पर मुझे एक क्वेश्चन, एक एक्चुअली एक और चीज याद आई। नितिन सर कहते थे कि you don't have to solve, basically you don't need to score 100%, right? But you should have faith in whatever you have prepared. 60% भी अगर आपका प्रिपेयर है, वो 60% पे आपको कॉन्फिडेंस है, तो वो 60% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो और दैट इज वेरी ट्रू, राइट? लाइक कभी किसी भी कंपटीशन एग्जाम 100% नहीं जाता है वो। और somehow it is also true for the interview. You don't need to basically know each and every single thing, but whatever you know, you should know very well. So yeah, that's about it. So that was very inspiring. Like whatever you told us, your journey, and what was your background, educational background, everything was very inspiring. So I hope the students watching this video will be able to like get out the myths we have, like the age myth, Yeah. and like marks कम आया है 10th में, 12th में कम marks कम आया है, कुछ कर नहीं सकते, and then कॉलेज में कैसे प्लेसमेंट्स करना है, प्लेसमेंट में कैसे परफॉर्म करना है. So like thanks a lot, Shashwat, for guiding us. No, and I will be more help us a lot. Yeah, I will be more than happy, like if people are getting motivation from me, and like at least if if at least like one person is able to get some motivation and is able to do something, it's worth it. It's worth like spending all this time, whatever we just talked about, right? So, and again, I will say at the end, please just blindly follow. मैं शायद एक चीज नहीं बताया था अभी, that I will just clear try to conclude just in 1 minute. Yeah. कि पहली चीज तो सर जो बताते हैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो करो, बट एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी, देयर इट माइट बी डिफरेंट, बट कंक्लूजन ओवरऑल सबका सेम होना चाहिए. फॉर मी माय स्ट्रेटेजी वाज लाइक दैट मेरा जब मैं कंपटीशन में, मतलब जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता था, तो देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि हाउ डू यू रिमेम्बर ऑल दोस थिंग्स, राइट? आपने एक टॉपिक पढ़ा, आप बहुत ही एक्सीलेंट आपने काम किया, आपने बहुत मेहनत की इस टॉपिक के लिए, उसके बाद में आपने अगला टॉपिक पढ़ा, फिर भी आपको पिछला वाला याद है, लेकिन उसके बाद अगला पढ़ा आपने, पीछे से आप कॉन्सेप्ट भूलने लगे. सो हाउ डू यू मेंटेन द नॉलेज अक्रॉस ऑल दिस टाइमलाइंस, राइट? कि एक महीने में पूरा हो गया, मैं कैसे करूं? सो माई ओनली स्ट्रेटेजी फॉर दैट वाज I used to basically create a notes. So when I said notes, so that means for every topic, there are something that is special that can help you in remembering key point about that topic, right? और अगर उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन होता था, उसको भी मैं नोट कर लेता था. सो आई हैड अ डायरी. सो इन स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू स्पेंड लाइक, पहले मुझे, और मैं, मेरी एक आदत थी, सुबह उठते ही मैं उस डायरी को रिपीट करता था. तो लाइक पहले मैं 5 मिनट, स्टार्टिंग में 5 मिनट लगते थे, एक ही टॉपिक होता था, चलो 5 मिनट लगे, फिर 10 मिनट हो, फिर एट लास्ट में मेरी वो जो ओवरऑल टॉपिक की बुक थी, वो मुझे लगभग 2 घंटे लगते थे, पूरा 1.5 से 2 घंटे पूरा रिवाइज करने में. और आई वॉज वेरी रेगुलर इन दैट. तो मुझे एट एनी पॉइंट, मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक मुझे पूरा दिमाग में बैठा होता था. और दैट वॉज द बिगेस्ट, आई विल से, चेंजिंग फैक्टर फॉर मी. क्योंकि एक तो हो गया कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन उसको याद कैसे कर रहे हो? अगर आप इतना, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी के इतना डीप में आप डेली करो, लेकिन आप अगर कंटिन्यूअसली विजिट करते हो, आप सारी चीजों को, आपको पूरा याद रहेगा. लेकिन अगर आप 2 महीने बाद, 2 महीने पहले की प्रॉब्लम देखोगे, आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, आप सोचोगे यार फिर से बैठ के देखें. और मैं हर टॉपिक की कॉपी बनाता था, कि जैसे मैं अब कुछ दिन बाद हो गए, ठीक है, आज मैं बैठा हूँ, सैटरडे संडे बैठा हूँ, ठीक है, ये टॉपिक बहुत दिन हो गया नहीं देखा है, भले ही मुझे इसको की पॉइंट याद है, मैं अपना कॉपी पलट लेता था. इट्स नॉट लाइक आई वाज लर्न, आई वाज मगिंग समथिंग, इट वाज नॉट लाइक दैट. आई न्यू द इट कॉन्सेप्चुअली, आई वाज वेरी स्ट्रांग ऑन दोस टॉपिक्स. और मैंने सारे क्वेश्चंस लगा रखे थे उस, तो ऐसा नहीं कि मैं रफ कॉपी में ऐसे करके रखा. हर टॉपिक की मेरी एक कॉपी होती थी, और उस कॉपी में मैं सारे ऐसे, और वो क्वेश्चंस हाईलाइट होते थे जो थोड़े से ट्रिकी होते थे, और या जो जिस क्वेश्चन को सॉल्व करके 4 और क्वेश्चन लग जाएंगे. एंड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड
इनोवेटिव लाइक एक मुझे अभी भी याद है कि कुछ परम्यूटेशन को कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता, आई विल नॉट से बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। उसमें कुछ तो ट्रिक था कि इट वाज हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। So what I did, like there was 5 or 6 different problems for that, so I tried to create a formula for that. 99% टाइम पे वो फार्मूला लग जाता था, 99% लाइक टाइम पे वो फार्मूला अप्लाई हो जाता था। and it was, if you don't even know that like how it works, it just like put the values and you are good. I shared the formula with a lot of my friends, and they were like, they got some benefit from that particular formula. But I'm just saying कि ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो दिस वाज माय वे ऑफ बेसिकली लर्निंग दिस थिंग। सर जब बताते हैं चीजें तो इतना डीप बताते हैं और इतना क्लियर और क्रिस्प होता है चीजें कि वो मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है, कि देखो कॉन्फिडेंस आ जाता है। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसी गाइडेंस क्लास 12 में होती, क्लास 10th में होती, हो सकता है मैं कुछ और ना कर रहा होता, लेकिन उस टाइम पे जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता वो बहुत ही अलग लेवल पे होता, और जो मैंने बहुत ही लेट में गेन किया वो मैं बहुत ही पहले गेन कर चुका होता। तो वो सारी चीजें मैं तो कहूंगा कि बहुत ही एक्स्ट्रा है। अगर सर गाइडेंस कर रहे हैं तो जस्ट प्लीज फॉलो दोस व्हाटएवर सर सेज। I'm not saying follow it blindly. You can also put your mind, and you will feel like nothing, whatever sir is saying, like nothing is wrong in that. And even after so many years, I can relate so many things. अब किसको 10 साल बाद याद होता है कि भाई इतनी सारी चीजें, लेकिन if I can remember, that means I am applying those things, right? That's why I can remember. नहीं तो ऐसे तो बस मुझे बहुत बहुत ही स्पेसिफिक चीजें याद रहेंगी, बट आफ्टर 10 years if I am able to tell you कि these were the things that happened, and you can also probably correlate because वो शायद you also might have basically experienced the same thing. So you can just clearly understand कि it was not even that time it helped me, it is even helping me today. That's why like I'm able to remember all those things. So yeah, that's the conclusion from my side. Now I will just hand over to you. You can just conclude it and close the meeting. Okay, so I hope सभी को काफी कुछ सीखने को मिला होगा फ्रॉम द इंस्पायरिंग स्टोरी बाय शाश्वत। एंड जो भी उन्होंने अपने करियर एंड जो भी मिथ्स उन्होंने क्लियर किए, बेसिकली मिथ्स ही होते हैं जो हमें किसी काम को करने से रोक देते हैं। लाइक कभी कोई रिलेटिव आ जाता है, कुछ बता देता है। सो आई होप कि सभी के मिथ्स क्लियर हुए होंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड थैंक्स अ लॉट शाश्वत फॉर गिविंग योर टाइम एंड इंस्पायरिंग अस। Thanks a lot. Thank you. Thank you. Have a great day. Bye.